हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनिमेशन विजार्ड। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। सो यस, लेट्स सी हाउ टू क्रिएट द फोल्डर स्ट्रक्चर इन अनरियल जनरेटर। ओके, सो यस, यू कैन सी इन माय ईपी गेम लॉन्चर माय प्रोजेक्ट्स, जो कि हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिएट किया था, टेस्ट प्रोजेक्ट। सो आई कैन ओपन दिस, विल launch the Unreal Engine. Just click this here. तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एंड अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो उसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। सो लेट्स सी, माय प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ एंड हियर वी हैव अ प्रोजेक्ट, द टेस्ट प्रोजेक्ट। आई कैन ओपन। ओके, सो यू कैन सी ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। एंड अब हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि कैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और लेवल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम देखने वाले फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपको। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें कंटेंट ड्रॉअर में जाना है। तो कंट्रोल एंड स्पेस बार, आई विल यूज द कंट्रोल एंड स्पेस बार, सो यू कैन सी हियर योर फोल्डर स्ट्रक्चर इन योर कंटेंट डिटेल। कंटेंट दैट मीन्स कि आप जो भी आपके पास कंटेंट है वो आप यहाँ पे ही फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे भी आप प्लेस करोगे, इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, आप किसी भी रिसोर्स से जो भी कंटेंट क्रिएट करेंगे या इंपोर्ट करोगे आप, आपको इसी कंटेंट ब्राउज़र में ऐड करना है, यहीं पे रखना है आपको। तो जो चीज़ें आप लेके आने वाले हो, जो आप यहाँ पे ऐड करने वाले हो, या यू कैन dump here. So how you can do this? So for that there is a folder structure is very important, otherwise your file will be messed and आपको बाद में बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जब भी आपको फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जस्ट चेक योर प्रोजेक्ट। हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, एंड इन दिस प्रोजेक्ट just open your content drawer. So control and space bar, and here what I will do, I will create a folder. So मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर। ओके, एंड मैंने इस फोल्डर का एक नाम दे दिया। जो भी मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, जो भी मैं बनाना चाहता हूँ, जैसे कोई गेम है उसका नाम आप दे सकते हो। ओके, सो मैंने एक नाम दे दिया डेमो। ओके, दिस इज लाइक दिस। ओके, and in this folder I will create a subfolders. Okay, like I will create a new folder and I will write a name like mesh or model। मतलब जैसे आप माया में जो आप फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक दैट। मैंने यहाँ पे मुझे जितने भी मेरे एसेट्स होंगे, मॉडल्स होंगे, जो मैं नेट से डाउनलोड करके ला सकता हूँ, या मैंने खुद माया में ब्लेंडर में क्रिएट किया, मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, या मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट से यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ। लाइक मैंने फैब स्टोर से या मार्केट प्लेस से कोई भी एसेट्स में लेके आया, तो उसको मैं रखूँगा कहाँ पे, where I will place. So what I will do, I will create a folder name with the mesh. Okay, and here all the mesh I will dump here. Okay, so this is one folder. I will create another folder, and new folder I will write a name material. Okay, so here we have a two folder, the one is the mesh and the other, that means model, and save the material. Okay, just like that I will create another folder. I will give a name texture. Okay, so here I will put my textures. Again I will create one more folder, and maps. You can write the maps or scene, just like a Maya you can write a scene name. So this is the simple your mesh folder, your texture, material, and map. You can create a other folder also if you are working on a game, if you require any blueprint or coding. So for that I will create a BP, that means the blueprint. Okay, you can write a complete name
according to your uh, comfort. Okay, I can create a new folder. I will write the name sound. Okay, this simple. This is my folder. So in content browser there is a demo. This is my project name. This is the folder, main folder, and here we have some sub folder like blueprint, maps, material, mesh, sound, and texture. Okay, so this is the folder, and according to this folder I will keep the things inside of this folder. Suppose if I have any models, I will keep the model in mesh folder. If I have a sound, I will keep the sound in sound folder. Suppose if I have some textures, I will keep it in the texture folder. Okay, this simple. I will show you if maps folder here. So if I will create any map or any level, so what I will do, I will just create a new level. Okay, and here I will take the basic level and I will create. So you can see this is my blank and new level, and here there is no name. So for that, what I need to do, I need to save this. So just click the file option and save current level. So where I will save this, so I'm working on this demo folder. I will click this demo, and here the subfolders, the maps, and I will click new map or any name you can write. So I will keep it new map and save. Okay, I will create another one. I will create again one new level, and this time I will click the open world and create. Okay, so again you can see this is the untitled, and what I will do, I will just save this one also, save current level, and you can see your new map, and I will write here demo and save. So you can see in your content browser, control and space bar, and your main folder like demo, you can check your maps. Okay, so here you can see your demo map, and here the new map. Okay, so in map folder you can save your level or your scene, your map. Okay, so if I open level, so you can see in content and in the demo folder there is subfolder maps, and here your two maps there. So if I will just new map, I can open and open. Otherwise you can directly click this in demo folder, you can directly click on this demo map. So you can open your map from here also. So this is your folder structure in your content, with the main folder is the demo, and later on you can see your subfolders. So this way you can create the folder in your project. Okay, and just remember this folder is connected to your project. Okay, so ये project हमने कहाँ पे बनाया, हमने desktop पे बनाया in test, the name of test. So ये folder में जो भी चीज़ें आप add करने वाले हो, like your textures, your sound, your mesh, ये आपके डेस्कटॉप पे भी कनेक्टेड है, डेस्कटॉप से भी कनेक्टेड है. तो आप यहाँ पे भी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो, और आप अपने डेस्कटॉप से डेटा डायरेक्ट वहाँ से कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं. तो इन नेक्स्ट वीडियो विल सी हाउ टू इंपोर्ट द एसेट्स. ओके, so for now, thank you so much.